हेलो दोस्तों, इंग्लिश कहानियां में खुशामदीद। आज की वीडियो में हम एक नई कहानी के साथ इंग्लिश सीखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए ये कहानी इंग्लिश जुबान में पढ़ूंगी, तो आइए शुरू करते हैं। The Clockmaker's Secret. In a quiet town nestled between the hills and a winding river lived an old clockmaker named Mr. Ellery. He ran a tiny shop filled with ticking clocks, each one carefully crafted with precision and care. Some were small enough to sit on a shelf, while others towered like giants, their deep chimes echoing through the wooden walls. Mr. Ellery was a mysterious man. He spoke little, smiled rarely, but his eyes were sharp and kind. Every morning, he unlocked the heavy oak door to his shop, dusted the glass counters, and began working with tools so tiny they could barely be seen with the naked eye. One rainy evening, a boy named Thomas entered the shop. He was no older than 12, soaked from the storm, with curiosity shining in his eyes. "Can I help you?" Mr. Ellery asked without looking up. "I heard you fix everything, even broken time," Thomas said shyly. The clockmaker finally looked up, his eyebrows lifting. "Broken time?" Thomas pulled a cracked pocket watch from his coat. "It was my father's. He gave it to me before he disappeared." Mr. Ellery took the watch carefully. Its hands were frozen, its glass scratched, but the inside was intact. "Come back in a week," the old man said softly. "Time needs patience." Thomas visited every day, watching as Mr. Ellery opened the watch, cleaned each cog, and whispered to the springs as if they were alive. He told Thomas stories of clocks that could sing, of a tower in Prague that held the heart of a king, of a watch that once saved a soldier's life during war. Each story felt like a dream, but Thomas listened closely. On the 7th day, Mr. Ellery handed him the restored watch. It ticked steadily, as if it had never stopped, but something was different. "There's a message," Thomas said, noticing a tiny engraving inside the lid. It read, "Follow the chimes at dawn." The next morning, just as the sun peeked over the hills, Thomas followed the sound of distant bells. They led him to the edge of town, to an abandoned train station, where he found a door hidden behind ivy. Inside, everything was silent, except for the ticking of a single clock on the wall. Beneath it lay a letter. Thomas opened it with shaking hands. "My dear son," it began. It was from his father. He had been a timekeeper, one of a secret group who guarded ancient clocks that held pieces of memory and history. When danger threatened the clocks, he had vanished to protect them. Now, with the pocket watch restored, Thomas had found the key. He returned to Mr. Ellery, tears in his eyes. But the shop was empty. Only a note remained. "Time is a circle. When you are ready, you'll find me." And from that day, Thomas began learning the craft of time, from the smallest spring to the grandest tower, carrying forward the legacy of the clockmaker's secret. अब मैं हर जुमला इंग्लिश ज़बान में पढ़ूंगी और इसके बाद आपको उर्दू में इसका मतलब बताऊंगी। लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मज़ीद इंग्लिश कहानियाँ उर्दू तर्जुमे के साथ सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। The Clockmaker's Secret, घड़ी साज का राज. In a quiet town, nestled between the hills and a winding river, lived an old clockmaker named Mr. Ellery. एक खामोश से कस्बे में, जो पहाड़ियों और बल खाती हुई नदी के दरमियान बसा हुआ था, एक बूढ़ा घड़ी साज रहता था, जिसका नाम मिस्टर एलरी था. He ran a tiny shop filled with ticking clocks, each one carefully crafted with precision and care. वो एक छोटी सी दुकान चलाता था जो टिक टिक करती हुई घड़ियों से भरी हुई थी, जिन्हें बड़ी एहतियात और महारत से बनाया गया था. Some were small enough to sit on a shelf, while others towered like giants, their deep chimes echoing through the wooden walls. कुछ घड़ियां इतनी छोटी थीं कि अलमारी पर रखी जा सकती थीं, जबकि कुछ द्यू की तरह ऊंची थीं, जिनकी गहरी घंटियां लकड़ी की दीवारों में गूंजती थीं. Mr. Ellery was a mysterious man. Mr. Ellery एक पूरा सरार इंसान था. He spoke little, smiled rarely, but his eyes were sharp and kind. वो कम बोलता था, शाज और नादर ही मुस्कुराता था, लेकिन इसकी आंखें तेज और मेहरबान थीं. Every morning, he unlocked the heavy oak door to his shop, dusted the glass counters, and began working with tools so tiny they could barely be seen with the naked eye.
हर सुबह वो अपनी दुकान का भारी लकड़ी का दरवाज़ा खोलता, शीशे की मेज़ों से गर्द साफ करता और ऐसे नन्हे औजारों से काम शुरू करता जो नंगी आंख से बमुश्किल दिखाई देते। One rainy evening, a boy named Thomas entered the shop. एक बारिश भरी शाम को एक लड़का दुकान में दाखिल हुआ जिसका नाम थॉमस था। He was no older than 12, soaked from the storm, with curiosity shining in his eyes. इसकी उम्र 12 साल से ज्यादा न थी, तूफानी बारिश से भीगा हुआ था और इसकी आंखों में तजस्सुस चमक रहा था। Can I help you? Mr. Ellery asked without looking up. क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? Mr. Ellery ने नजर उठाए बगैर पूछा। I heard you fix everything, even broken time, Thomas said shyly. मैंने सुना है आप सब कुछ ठीक कर लेते हैं, यहाँ तक कि टूटा हुआ वक्त भी, थॉमस ने शर्माते हुए कहा। The clockmaker finally looked up, his eyebrows lifting. Broken time? घड़ी साज ने आखिरकार ऊपर देखा, इसकी भनुएं उठ गईं। टूटा हुआ वक्त? Thomas pulled a cracked pocket watch from his coat. It was my father's. He gave it to me before he disappeared. थॉमस ने अपनी जैकेट से एक टूटी हुई जेब घड़ी निकाली। ये मेरे वालिद की थी। उन्होंने ये मुझे इससे पहले दी जब वो गायब हो गए। Mr. Ellery took the watch carefully. Its hands were frozen, its glass scratched, but the inside was intact. Mr. Ellery ने घड़ी को एहतियात से लिया। इसकी सुइयां रखी हुई थीं, इसका शीशा खराश ज़दा था, लेकिन अंदरूनी हिस्सा सही सलामत था। Come back in a week, the old man said softly. Time needs patience. एक हफ्ते बाद वापस आओ, बूढ़े आदमी ने नरमी से कहा, वक्त को सब्र की जरूरत होती है। Thomas visited every day, watching as Mr. Ellery opened the watch, cleaned each cog, and whispered to the springs as if they were alive. थॉमस हर रोज आता, देखता कि कैसे मिस्टर एलरी घड़ी को खोलते, हर दानतदार पुर्जे को साफ करते और चश्मों से ऐसे सरगोशी करते जैसे वो जिंदा हों। Of clocks that could sing, of a tower in Prague that held the heart of a king, of a watch that once saved a soldier's life during war. वो थॉमस को कहानियां सुनाते, ऐसी घड़ियों की जो गाती थीं, प्राग में एक मीनार की जिसमें एक बादशाह का दिल महफूज था, एक घड़ी की जो जंग के दौरान एक सिपाही की जान बचा चुकी थी। Each story felt like a dream, but Thomas listened closely. हर कहानी ख्वाब जैसी लगती थी, लेकिन थॉमस गौर से सुनता था। On the 7th day, Mr. Ellery handed him the restored watch. 7वें दिन, Mr. Ellery ने इसे ठीक की गई घड़ी थमाई। It ticked steadily, as if it had never stopped. ये मुसलसल टिक टिक कर रही थी, जैसे कभी रखी ही ना हो। But something was different. लेकिन कुछ मुख्तलिफ था। There's a message, Thomas said, noticing a tiny engraving inside the lid. It read, Follow the chimes at dawn. यहाँ एक पैगाम है? थॉमस ने कहा, जब उसने ढक्कन के अंदर एक नन्हा सा नक्श देखा। इसमें लिखा था, सुबह की घंटियों का पीछा करो। The next morning, just as the sun peeked over the hills, Thomas followed the sound of distant bells. अगली सुबह, जैसे ही सूरज ने पहाड़ियों से झांकना शुरू किया, थॉमस ने दूर की घंटियों की आवाज का पीछा किया। They led him to the edge of town, to an abandoned train station, where he found a door hidden behind ivy. ये आवाज़ें इसे कस्बे के किनारे एक वीरान रेलवे स्टेशन तक ले गईं, जहां इसे एक दरवाज़ा मिला जो बैलों के पीछे छुपा हुआ था। Inside, everything was silent, except for the ticking of a single clock on the wall. अंदर सब कुछ खामोश था, सवाए एक घड़ी की टिक टिक के जो दीवार पर लटकी हुई थी। Beneath it lay a letter. Thomas opened it with shaking hands. इसके नीचे एक खत रखा था। थॉमस ने कपकपक पाते हाथों से इसे खोला। My dear son, it began. मेरे प्यारे बेटे, खत का आगाज यूं हुआ। It was from his father. ये इसके वालिद की तरफ से था। He had been a timekeeper, one of a secret group who guarded ancient clocks that held pieces of memory and history. वो एक वक्त का रखवाला था,
एक खफिया गुरु का रकन जो ऐसी कदीम घड़ियों की हिफाजत करता था जिनमें याददाश्त और तारीख के टुकड़े महफूज थे. When danger threatened the clocks, he had vanished to protect them. जब इन घड़ियों को खतरा लाहिक हुआ तो वो इन्हें बचाने के लिए गायब हो गया. Now, with the pocket watch restored, Thomas had found the key. अब जब जैब घड़ी मरम्मत हो चुकी थी, थॉमस को चाबी मिल गई थी. He returned to Mr. Ellery, tears in his eyes, but the shop was empty. वो मिस्टर एलईडी के पास लौटा, आंखों में आंसू लिए, लेकिन दुकान खाली थी. Only a note remained. Time is a circle. When you are ready, you'll find me. सिर्फ एक नोट बाकी था, वक्त एक दायरा है. जब तुम तैयार होगे, तुम मुझे पालोगे. And from that day, Thomas began learning the craft of time, from the smallest spring to the grandest tower, carrying forward the legacy of the clockmaker's secret. और इस दिन से थॉमस ने वक़्त की कारीगरी सीखनी शुरू की, सबसे छोटे पर्दे से लेकर सबसे बड़ी मीनार तक, घड़ी साज के राज की विरासत को आगे बढ़ाते हुए. अब तक हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया. अगली वीडियो में मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.